Hello, 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 hello. Let's talk about the question number one. That is, first time the scientist based classification is attempted by. This is done by the Aristotle. Hello. Let me check the notes. Today chapter is biological classification, and first question is consider the following regulation and region of. Hello guys, today chapter name is biological classification, and first question is consider the following regarding the region for the fact that now cyanobacteria kept in Monera, not in Plantae, because they are the prokaryotes. एक रीजन तो ये है। दूसरा क्या है, द सेल वॉल ऑफ साइनोबैक्टीरिया हैज पेप्टाइडोग्लाइकेन, यही सही है। दे कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। आई डोंट फिक्स, आई विल गो विद आंसर नंबर 4। लेट्स चेक। यस, करेक्ट। 4000 करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन is first first scientist base for classification was attempted by, it is the Aristotle. Yes, correct. Next is the presence of RBC to the classified animal are used in the unical category by the, इसको अरिस्टोटल ने एज ए कैटेगरी यूज किया गया था। फर्स्ट आंसर नेक्स्ट, विच इज द wrongly match फंजाई हेटरोट्रॉपिक सही है, प्रोकैरियोट्स अरिस्टोटल प्रोकैरियोट्स ही होता है, नहीं, आई डोंट थिंक लाइक इट इज रॉन्ग। मोनेरा इज ओनली फॉर, yes, correct. Next is heterotropic eukaryotic multicellular are in the lack of cell include in the, it will be the animalia. Oh, right. Next is the in the five kingdom classification, which single kingdom contains blue green algae, nitrogen and halogen, ये है मोनेरा। हम मेथोनोजन की बात आगे तो मोनेरा आ जाएगा। Evolutionary history of Armenia is also known as phylogeny. Right. Next one. In two kingdom classification, plants have all bacteria, algae, fungi with them on the basis of two kingdoms of India. ये सेलवाल की बेसिस पे हुआ था। टू किंगडम क्लासिफिकेशन का मेन बेसिस सेलवाल ही था। The five kingdom classification was given in 1969. Kingdom Animalia is classified by Animalia directly depend on indirectly depend on autotroph absence of cells of cell. I think absence of cell was the main category, I think. Oh, right. Next is question number 11, which is which of the following are not the limiting two kingdom classifications? Which of the following are the limiting of two? We could not decide between eukaryotes and prokaryotes. ये तो है। ये could not describe unicellular multiple. Name unclassified. Very difficult to understand. Classify. क्लासिफाई करना तो कोई डिफिकल्ट नहीं था।
इसलिए 4 6 आ जाएंगे, सही है। अच्छा क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फॉर थ्री डोमेन सिस्टम? थ्री डोमेन सिस्टम जो हमारा बना था, यूकैरियोट्स, प्रोटिस्टा एंड मोनेरा। थ्री डोमेन सिस्टम का नाम, पहला का नाम है, हम्म, ये मोनेरा को दो पार्ट में डिवाइड करता है, आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया एंड यूकैरियोट्स which have nucleus into two domains. तो सही है। The three all third domain include all eukaryotes, ये भी सही है। The result six का classification हुआ। It is not phylogenetic, ये गलत है, ये phylogenetic होता है। Animal differ from plant in, it is heterotrophic. Yes, it will be third. Next, first attempt of biological classification was based on the need to use organism for on use. Here, which kind of thing is considered? Food, shelter, and clothing. क्लॉथिंग आई थिंक नहीं था। हंटिंग के लिए भी हम डॉग्स वगैरह का यूज करते थे। एक्सेप्ट क्लॉथिंग आई थिंक सब थी। नो, ये गलत हो गया हमारा। इसको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। एनसीईआरटी में दिया होगा। प्लीज रेफर मी। इट इज डन नॉट medical references but born out made up using arena for on use for food, shelter and clothing, not for hunting. ये इम्पोर्टेंट है, इसको हाईलाइट कर लीजिएगा आपने एनसीईआरटी की लाइन। नेक्स्ट, नेक्स्ट वन इज विच आउट ऑफ द फॉलोइंग, विच आउट ऑफ द फॉलोइंग नॉट यूज, विच आउट ऑफ द फॉलोइंग the basis of 5 classification का कौन सा बेसिस नहीं है? आई थिंक ये फाइलोजेनिक रिलेशनशिप इज नॉट, गलत। Morphology is not the basis of 5 classification. एनसीईआरटी की लाइन चेक करते हैं। Main category of 5 classification is the cell structure, body organization, mode of nutrition, reproduction and phylogeny. ये तीनों, ये एनसीईआरटी की लाइन है, इम्पोर्टेंट है, इसको मार्क कर दीजिए, हाईलाइट कर लीजिए। ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, तो मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आइडेंटिफाई द ग्रुप दैट आर नॉट करेक्ट कैरेक्टरी। मोनेरा प्रोकैरियोट्स होते हैं, सेल वॉल अब्सेंट नहीं होता, तो पहला ही गलत हो गया। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अब्सेंट रहेगा और बॉडी सेलुलर लेवल, लेकिन ये अब सेल वॉल अब्सेंट नहीं है, इसलिए पहला ही है सही। What kind of similarity not triggered for evolution better classification system? And what kind of similarity not targeted for the evolving better classification? इस तरह का similarity was not triggered for the evolving better classification. Morphology, physiology, behavior. I think four is the right answer. Yes, four. Answer is four. ये भी अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 18, the five kingdom classification, unicellular, green algae are included in kingdom। यूनिसेलुलर है, यूनिसेलुलर कितने, ग्रीन algae, यूनिसेलुलर ग्रीन algae, यूनिसेलुलर है तो कैसे दिया जाएगा मोनेरा, मोनेरा
English regular green algae. अच्छा अच्छा देखो definition. Kingdom to wisdom brought together chlorella and disease with plant in the cell wall जैसे इसको प्रोटेक्शन में डाल दो. तो सब response करने में गलती हो गई. Next question है the domain eukaryotes include how many kingdom. इसमें होता है प्रोटिस्टा फंजाई प्लांटी एंड फोर. आंसर इज गोes to four. सही. Next, which of the following statements is wrong with respect to two kingdom classification? Developed time of listeners used for long time. Wrong button. Could distinguish between photosynthesis and non-photosynthesis. ये distinguish नहीं करता. तीसरा सही है. Next. Question number 8 is according to R.H. Whitaker, Chlamydomonas and Chlorella will be kept under Chlamydomonas and Chlorella ये दोनों प्रोटिस्टा में रहते हैं. Next, which of the following statement is wrong and not incorrect with respect to biological classification attained by the Aristotle? Incorrect नहीं है मतलब correct बताना. ठीक है. Based on the complex morphology character Aristotle not correct. The plant is classified based on सही है. Animals are classified based on nutrition. Phylogeny was also considered. I don't think phylogeny is considered. So not correct मतलब correct बताना. और correct यही है tree सब और हम. Yes. यहाँ गलती हो गई. ठीक है. अच्छा क्वेश्चन था ये. Not correct not incorrect करके गलती करवा दी. The organism in which organ level of body organization is found are organ level planty or animal. So in which organ system level. Oh, it will only found in animal. Important. ये हमारा NCERT लाइन ये टेबल नंबर 2 दिया गया. नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 24. Which of the following statements are not correct regarding biological classification? Gross morphology was not considered into system classification. सही है. Classification system has undergone many changes over the time. ये भी सही है. Two kingdom classification project to understanding them has been changed. Nature and method of reproduction were two critical which is needed to consider after. I think यही correct नहीं लग रहा है. पहला ये not consider. Gross morphology consider किया गया. The two is long term found in hypothetic based on the gross morphology need to use in the other character like cell structure, nature of wow, really, really like gross morphology. Next is if only the mode of nutrition were to be considered, then how many kingdoms have to be together under saprophytic mode of nutrition? Saprophytic mode of nutrition. कौन कौन करता है saprophytic? ये undergo saprophytic
Monera, except plant, except plant and animalia. I think all of them, except plant, सब करते देखते हैं कि फ्लाइंग क्षेत्रों को कुछ होता है इसका The biological question was at attempt intensively to make the scientific easy to use to use our income for our use to make the better understanding of research running over the world to make the connection between living and non-living. Attentive easily study के लिए oh attain by the use of our on study के लिए use need to use on food and center. Five kingdoms kingdom system of classification suggested by Aristotle cannot be the present not used, not based on presence and absence of material, mode of mode of operation, complexity of the body, not based on presence and absence of defined yes. So this is a mode of reproduction होता था mode of nutrition भी होता था complexity of the body. Okay. So second mode of nutrition नहीं किया गया arithmetical not main mode of nutrition को अपना 5 different classification यूज किया गया कॉमर्स से कौन होता है विब्रियो होता है कॉमर्स से pick up the wrong statement cell wall is absent in anemia protista सही बात protista has photosynthetic and hepatocyte mode of nutrition सही है some fungi are edible सही है nuclear envelope is present in mononuclear which is not correct with respect to bacteria sole member of kingdom Monera, most abundant organism. Snow does not host any life. I think that's is for today lecture. Next lecture coming.